मुख्यमंत्री तरुण गोगोई बाद में पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक साफ सवाल होना चाहिए, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, ये एक चूक हुई है और इसकी व्यवस्था की जाएगी कि बाद में मीडिया से मुखातिब हो प्रधानमंत्री और जो उनको जानना है वो जाने। आखिर ये नौबत क्यों आई? सवाल ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या केंद्र सरकार, चूंकि 2 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जाहिर तौर पर अपनी इच्छा से नहीं दिया, उन्होंने दबाव में दिया है और व्यापक दबाव था, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था। अगर बात करें असम की, तो असम में जितनी पार्टियां हैं वो लगातार, अन्य संगठन आसू कह सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी इस दौरे का, या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वो अलग, सारे पार्टियां जो हैं अलग अलग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर। आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चारों ओर से दबाव बन रहा था, इसकी वजह से भी मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? पहला जो इशू है जो दिल्ली में हो रहा है, जो नेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स में जो हो रहा है, जो 2 मंत्री को रिसेंटली फोर्स किया गया, कंपेल किया स्टेप डाउन करने के लिए, दैट इज़ अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे जो मीडिया का जो क्वेरी बेसिकली जो उभर रही थी कि बिकॉज ही इज़ वन पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग असम, नंबर 1, Number 2, that he represents the entire Northeast. So media definitely wanted to know कि उनका क्या प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज हमेशा कहा जा रहा है, हमेशा वी हैव बीन सीइंग ऑपोजिशन पार्टीज हो या सिविल बॉडीज हो, आई मे साउंड रिपीटेड, बट दिस इज द इशू दैट प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेट और फेल्ड टू रिप्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट इन टोटलिटी, बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हैज रिमेन साइलेंट टू द इशूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो क्राइम इशूज़ हो, चाहे वो डेवलपमेंटल इशूज़ हो, चाहे वो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के इशू हो। तो प्राइम मिनिस्टर को हमेशा माना जाता है कि वो साइलेंट रहते हैं, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, बट ही फेल्स to realize that he has been elected from this state for the 5 consecutive time, but he has nothing special for the Northeast. But time and again we have seen the policy of the government of India that they have special grants, special package for Northeast, but that is by default, not just because Manmohan Singh represents Assam or is a face from Northeast in Delhi, but it's an usual practice which we have seen. But आज मीडिया वही एक सवाल पूछना चाहते थे. आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन एन हेरेसमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हैज बीन साइलेंट ऑफ कोर्स ऑन द इशू ऑफ पवन कुमार बंसल and Ashwani Kumar stepping down, but media in Northeast or media in Assam was very specific, would have been very specific, and if they would have said that media will be allowed 5 minutes time or 10 minutes allotted time, and media in Assam would have respected that and would have worked accordingly in that perspective time. But I think as I said, there has been a lack of coordination between PMO and the Dispur, which might have cropped up this problem. But I think this is very unfortunate. It should have not happened, because people in Assam has the right to know what Prime Minister would like to tell the people of Assam. आज वो असम से चुन के जा रहे हैं, लोगों के बीच तो कुछ कहना पड़ेगा. Of course people are not voting him directly, but people's representatives, the MLAs are voting Prime Minister to get to the Rajya Sabha. If today entire Assam protests, that we will protest, because in 1991 when Prime Minister was being nominated from Assam, there was much uproar in Assam. People were showing the resentment, civil bodies were showing the resentment, political parties were showing resentment that he is not from this region, he should not be allowed to represent from this state. We know that there has been a controversy that he doesn't stay in that rented house of Hemaprabha Saikia where he is presently addressed to, but he never stays there. So I think these are the issues. People are emotionally attached, and I think Prime Minister should have understood that he represents this state, he represents this part of the world in Rajya Sabha, and it is his responsibility to speak to the people of Assam through media. Media would have not quizzed him. I am sure media would have not quizzed him. Media would definitely taken that right time, whatever would have been allotted, and they would have asked the question which the people of Assam wanted to know. But I fail to understand why even media was not allowed to cover the event. They covered the proceeding, that while the Prime Minister was filing his nomination from Dispur. I think it is very unfortunate. It's really very unprecedented, which has been shown, because we understand that media is supposed to be the fourth estate, and here we see that there may be security issues, but covering a nomination, I think what for are the security personnel? Why the SPG team has arrived here if they cannot handle the media, they cannot please the media? जी, एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए.